Hello, my dear students. I am happy to know that requests are coming apart from the 10th standard maths. I have received a request from one of my subscriber, Eric Ops, for 7th standard exponent and powers. So I expect those who are facing difficulties in any chapter from maths from any standard, they can send requests. So based on those requests, I will add ad hoc sessions. So today's session is exponent and powers, class 7 NCERT. Let's start. Exponent and powers. Introduction. What is exponent and powers? A repeated addition is expressed in a shorter form using multiplication. Example 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 multiplied by 3. ये हमने ऑलरेडी बचपन से पढ़ के आए हैं, राइट? आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे. इवन दो व्हेन मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, यही फ्रेज यूज किया जाता है. मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन, राइट? Multiplication means repeated addition. In the other words, we can say as 3 times 10 added. When 10 is added 3 times, so the main word is times. Whenever you see times word वहां पे है, then definitely you need to multiply. Okay, ये हमारा just recap of previous standard है. So इस standard में what is the difference? In the same way, a repeated multiplication can be written in a shorter form using exponent. Okay, यहाँ पे क्या था? Addition था, right? So यहाँ पे क्या है? Multiplication है. Can you see the difference? Okay, यहाँ पे जब addition था, इसका नाम दिया गया था multiplication. Okay, repeated addition is expressed in a shorter form using multiplication. When a repeated multiplication, okay, repeated multiplication हो रहा है, then that is known as exponents. Okay, that is known as exponents. For example, 10 multiplied by 10 multiplied by 10 is equal to 10 to the power 3. That means here 3 times 10 is added, right? Here 3 times 10 is added, but here 3 times 10 is multiplied. Okay, so you should write in this way, 10 to the power 3. Okay, in the brief of the exponent, I'm just explaining you. Exponents. Let's see the expression 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. How many times 5 is multiplied? Here 4 times, right? In the above, we can see 5 is repeated 4 times. Okay, 5 is multiplied 4 times. The above expression can be written as 5 to the power 4. The number 5 to the power 4 is read as 5 raised to the power 4 or simply 4th power of 5. Okay, children, remember this. How you need to read the expression 5 raised to the power 4 or 4th power of 5. Usually हम यही use करते हैं, right? 5 raised to power 4. In 5 raised to power 4, 5 is called base and 4 is called power, which is our chapter name. Okay, power. Okay, 5 is called as base, 4 is called as power. Okay, if I will write like this, so which is the base? Base is 3 and power is equal to 2. And how we should read this one? 3 raised to 2 or else 3 raised to power 2. Okay, if a base is negative integer, okay, this is an important point, everyone remember. If a base is a negative integer, that means if I will take this in the example. Okay, minus 3, base is negative integer, then the product will either negative or positive depending upon whether the exponent is an odd or even number. Okay, here exponent means this power. Okay,
whether the exponent is an odd or even number. Sorry, this is power, whether the, okay. If I will write here even number, 2 is an even number, everyone knows that. See, here is a box given for to remember. When the base is negative integer and the power is even number, then answer should be in a the answer is the positive integer. So let's see. So if we will write -3 multiplied by -3, then what will we get? 9. And minus into minus, it will be plus. Okay. So if I will take odd integer, that means 3. -3 multiplied by -3 multiplied by -3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. But minus minus plus, again plus minus minus. Okay. So if a base is a negative integer, then the product will either negative or positive, depending upon whether exponent is an odd or even number. आया समझ में? अगर ये even number है तो आंसर आपका पॉजिटिव इंटीजर है. अगर ये ऑड नंबर है, then your answer is negative integer. Okay. Now loss of exponent. अभी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. दैट मीन्स व्हेन आप बेस सेम देखोगे, दैट मीन्स यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ओनली पावर अलग है, विच इज हियर m एंड हियर n. ओके, I will write here, then it will be visible to you clearly. Okay, a to the power m multiplied by a to the power n. बेस सेम है, पावर अलग है, then what you should do? a to the power m plus n. For example, 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 2. Okay, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है. अच्छा, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 3 टाइम्स किया, अगेन 2 multiplied by 2 2 टाइम्स कर लिया, तो कितने टाइम्स 2 हुआ? 5 टाइम्स 2 हुआ. देन अकॉर्डिंग टू आवर इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने क्या बोली थी? दिस इज द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज एक्सपोनेंट. सो हमने क्या किया था? 2 टू द पावर जितनी बार 2 है तो 5 लिखा था, राइट? सो by applying the law of exponent, simply you can write 2 to the power 3 plus 2, that is 2 to the power 5. आंसर दोनों में सेम आया. ओके, सो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ डूइंग द लेंथी प्रोसेस. ओके, यू विल गेट लाइक दिस ऑल्सो आंसर, बट प्रैक्टिस करो एवरी टाइम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने के लिए. ओके, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. Next law, dividing powers with the same base. Okay, a to the power m divided by a to the power n. So we will write like this. So what is the law? Example, 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3. Okay, if I will write like this. So what is the final answer? 2 to the power m की जगह पे 5 है and n की जगह पे 3 है, तो in we can write here 5 minus 3, that is 2 to the power 2. Okay, so final answer is 2 is multiplied 2 times, your answer is 4. One more example, if I will give 3 to the power 5 divided by 3 to the power 2. So क्या होगा अभी? चलो गेस्ट करो. 3 to the power 5 minus 2, 3 to the power 3. So 3 is multiplied 3 times. 3 3s are 9, 9 3s are 27 is your answer. Which law is this one? Dividing powers with the same base. Next law of exponent is taking power of a power. That means a to the power m. N is the power of a. Again m is the power of both a to the power n.
Okay, so the answer will be a to the power m and end. That means m और n multiply हुआ है. So let's see the example. 2 to the power 2 whole multiplied by whole to the power 3. So क्या करना है? 2 to the power 2 into 3. Okay, so आपका आंसर क्या आएगा? 2 to the power 2 to the power 6. 2 to the power 6. That means 2 is multiplied 6 times. 4, 5 and 6. So your answer will be 64. Okay, understood? This law is known as taking power of a power. Taking power of a power. Next law, multiplying powers with the same base, same exponents with different base. Okay, हमने पहले law में क्या पढ़ा था? With the same base. But see here, your base is different. A to the power m multiplied by b to the power m. Then ab multiply होगा, m common जाएगा. So let's write an example. Let's see an example. 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 2. See here, base is completely different. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. तो क्या करना है हमें? 2 multiplied by 3. So power is same. We can take it common. So 2 3s are 6 to the power 2. That is 6 multiplied by 6. 36 your answer. Okay. This law is known as multiplying powers with the same exponents with different base. Next law is numbers with exponent 0. Okay, अगर आपको any number in base and exponent is 0, then the value is always 1. 2 to the power 0 is equal to 1. 3 to the power 0 is equal to 1. Even though वो जितना भी बड़ा number क्यों ना हो, 10,000 to the power 0 is also 1. 1 lakh to the power 0 is also 1. Any number, if any number is in the base and power is 0, then the value always 1. Next law, dividing powers with the same exponent with different base. Again, bases are different, but exponents are same. So what will happen? A to the power a upon b whole to the power m. Okay, again same example we will take. 3 to the power 2 divided by 2 to the power 2. So we need to do 3 upon 2 whole to the power 2, right? So 3 is multiplied 2 times. Again 2 is multiplied 2 times. That means 9 upon 2. Sorry, 9 upon 4. Okay. If these type of questions are given in your alphabetically, the base are alphabets. That means suppose this will given like this: a to the power 3 divided by b to the power 2. Okay, so how you need to write? A upon b, sorry, powers are same, right? So हमें same power लेना है. So a upon b to the power 3. So this will be your final answer, because हम तो a को 3 times multiply नहीं तो ऐसे लिख पाएंगे, a to the power 3 upon b to the power 3. Okay, so ये दोनों में से कोई भी एक आपका final answer होगा. Okay, loss of the exponent हो गया. Now decimal number system. Decimal number system क्या होता है? Okay, this is an example given. 47,561. बचपन में आप लोगों को याद होगा, आप expanding form करते थे. Okay, for example, I'm writing here 236. कैसे लिखते थे? 200 plus 30 plus 6, right? So उसी को और थोड़ा expanding हम करेंगे आज.
ओके, सो इसी को अगर लेंगे 47,561, सो 40,000 प्लस 7,000 plus 500 plus 60 plus 1. Okay, so instead of 40,000, we can write 4 into 10,000. आंसर तो सेम ही आएगा ना. 40,000 मीन्स क्या है? 4 into 10,000 plus 7 into 1,000 plus 5 multiplied by 100 plus 6 multiplied by 10 and plus 1. Okay, इसको हम कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आएंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 में कितने जीरोस है? 4 जीरोस है. तो आपको क्या करना है? 10 to the power 4 लिखना है. तब क्या होगा? 1 में 4 जीरोस आ जाएंगे. हो गया फर्स्ट वन. सेकेंड वन, 7 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 10 to the power 3. That means 1 में अगेन 3 zeros. 5 multiplied by 10 to the power 2 plus 6 multiplied by 10 to the power 1. And here how we will write? 1 multiplied by 10 to the power 0. Because हमने एक law of identity क्या पढ़ा था? a to the power 0 is equal to 1. So 10 to the power 0 will also be 1. So 1 multiplied by अगर 10 to the power 0 लिखेंगे तो 1 multiplied by 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा. तो इंस्टेड ऑफ 1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 multiplied by 10 to the power 0. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब नॉर्मल जो भी नंबर दिया जाएगा उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. दिस इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम. Next is expressing large numbers in the standard form. Okay, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. numbers of, sorry, this is stars. Numbers of stars in our galaxy is this one. Okay, so these numbers are not convenient to read and write immediately. So at that time, to make it convenient, we use powers. कैसे powers use करेंगे? इसी को देखते हैं. कितने zeros है? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Right? So instead of this number, we can write 10 to the power 11. Okay, 10 to the power 11. अच्छा, इसका और एक एग्जाम्पल देखेंगे. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ओनली. Suppose we need to convert 59. Okay, 59. Okay, before that आपको तो डेसिमल पता ही होगा. Okay, this is the integral part, this is the decimal part. Point is here. Okay, point is here. So we when okay, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट आपको पता चला. Okay, this side, left side of the point is known as integral part and this is known as your decimal part. Okay, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी नंबर अगर दिया जाता है, ओनली 1 डिजिट यू नीड टू कीप इन द इंटीग्रल पार्ट. हाउ मेनी डिजिट? 1 digit should be there in integral. Okay, I am writing only I. Integral part. Okay, that means this one. Integral part means this one. Okay, this is the decimal part. For example, और एक अच्छा, अगर कोई भी नंबर, सिंपल नंबर दिया गया है 53, यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल पॉइंट दिख रहे हैं क्या? नो. दैट मीन्स द डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द नंबर. यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट. अगर हम ऐसे 0 0 लिखेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है. दैट्स वाई हम डेसिमल पॉइंट को शो नहीं करते हैं. ओके, कुछ नहीं है. दैट मीन्स योर डेसिमल पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द नंबर.
ओके, पॉइंट टू रिमेम्बर, यहाँ पे मैं बॉक्स बना के आपको जस्ट बता रही हूँ. ओके, इफ you need to shift the decimal point to the right side. Okay, this is the integral part, this is the decimal part. If you need to shift the decimal point to the right side, then you should divide. Okay, if again same, here is the decimal point. If you need to shift the decimal point to the left side, then you need to multiply. Okay, ये एक छोटा सा ग्राफ है. सो इसमें से कैसे हम करेंगे बताती हूँ. सपोज नंबर इज 59 गिवन. तो जस्ट मैं क्या बोली, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, एक डिजिट हमें पॉइंट के पहले चाहिए. तो यहाँ पे कुछ कहीं कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, मतलब लास्ट में है. अच्छा ठीक है, लास्ट में है. अभी लास्ट डिजिट नंबर के बाद पॉइंट है, उसे हमें कहाँ लेके जाना है. देखो अभी हमें उसे लेफ्ट साइड लेके जाना है. किधर लेके जाना है, लेफ्ट साइड लेके जाना है. तो लेफ्ट साइड का एरो मार्क क्या दिया था मैंने, देखो मल्टीप्लीकेशन साइन. क्या मल्टीप्लाई करना है, हर वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में रिमेंबर 10 ही मल्टीप्लाई होता है. तो 10 टू द पावर कितना मल्टीप्लाई है, दैट इज completely based on how many digits are there before the decimal point. Okay, 5.9 लिखा, लिख दिया. अभी 10 लिखा, लिख दिया. अभी कितना पावर में देंगे. अच्छा, पॉइंट कितने डिजिट पहले मूव हो रहा है चेक करो, ओनली 1 डिजिट. तो 10 to the power 1. Okay, one more example we will see. 2, 3, 4. Okay, same concept. 2.34 पहले लिख लो, क्योंकि एक ही डिजिट चाहिए इन द इंटीग्रल पार्ट, नॉट मोर देन 1. मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर कितना देना है. अभी पॉइंट इधर है, इधर से आपको शिफ्ट करना है कहाँ तक, 2 के बाद. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, हाउ मेनी डिजिट्स को क्रॉस करके पॉइंट जा रहा है, तो 2 डिजिट, 10 to the power 2. Okay, one more example, 1689. Again 1.689 पहले लिखो, then 10 to the power what number, again point is here. Before how many digits you need to shift the point, 3 digits. So here simply write down 3. Okay, let's see few more examples of this. 10862. Okay, one more also adding 1. Okay, simply what you should do first, 1.08621 हो गया. Then how many digits से पहले जा रहा है point, 1 2 3 4 5. Simply 10 to the power 5. Okay, next one more example, 5900. 5.900, or else you can write only 5.9 multiplied by how many digits, 3 digits. पहले point जा रहा है, तो 10 to the power 3. Okay, 10 to the power 3. आपको एंटायर लेसन एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं एक्सपोनेंट एंड पावर का. एंड आप जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज इन एनी सोल्यूशन, ओके, आप कमेंट बॉक्स में जस्ट आप लिख सकते हो एक्सरसाइज 13.1 और 13.2, फर्स्ट क्वेश्चन, 8th बिट, ऐसे भी आप मेंशन करोगे, तो आई विल try to upload the image of the solution, or else I can made a video for that. Okay, I will made a video for that, or else I will upload a image. अगर आपको पूरा concept और chapter समझ में आया है, so please support me and do like, share and subscribe
my YouTube channel PhD Digital Maths एंड आपके सपोर्ट से ही मैं और नए नए वीडियोस करने की कोशिश करूंगी। एंड जो भी डाउट्स है चैप्टर वाइज आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, बेस्ड ऑन अपन दैट आई विल start those lesson sessions. Thank you. See you in the next session.